So, hello all, welcome to this series of fan engagement motivation where we are talking to some passionate IPL fans and trying to understand that what are the factors that motivate them to follow a specific IPL franchise very passionately. So, in this series, today we have Romit Ganguly with us, who is a very passionate Mumbai Indians fan, and he has been very happy with the performances of his team, and he has represented Mumbai Indians on Rajasthan Royals fans forum and various other fans forums and cricket debates. So he's a very well-known face among the Mumbai Indian fans and cricket community. So Romit, welcome to this show. Hi. Thanks for having me here. It's pleasure to be here. Like seriously, like when there is some platform where you can express your love for a franchisee, it's really feels good. So thanks for having me in such a platform. Right. So tell me how your journey as a Mumbai Indians fan started. So when the IPL started, there were so many franchisees. So what motivated you to follow Mumbai Indians? See, like in 2006 or 7, like it was the first time when I started playing cricket. I didn't understand anything of it. So obviously at that time, my father showed me that this is Sachin Tendulkar playing. So seeing him playing in India, playing those straight drives and all, I was very impressed by him. And like I thought that he might be the idol for me, and I must follow him so that I can improve my cricket. Now, when in 2008 IPL came into the picture, like उस समय तो I was 8 years old, तो कुछ समझ में भी नहीं आता था, like what is this going on? इतने सारे इंडिया में तो खेलता था, like how is it now in what Mumbai Indians franchisee? तो फिर ठीक है, like I didn't understand the difference of all the franchises क्या है. तो I saw Sachin Tendulkar playing in that blue jersey Mumbai Indians, so I saw अच्छा ये टीम के लिए खेलता है, तो like I only watched him playing. I didn't support any franchisee at that time. So slowly जैसा IPL प्रोग्रेस, तो वो फ्रेंचाइजी के लिए मेरा एक अटैचमेंट भी बन गया. Like whom, like when people used to ask me, like you watch IPL, so you must support Kolkata because I'm from Kolkata only. Then I said no. I said Sachin Tendulkar plays for Mumbai Indians, so I support Mumbai Indians. So after that, as that is how my journey started supporting Mumbai Indians. So like there were some big names that time, Sanat Jayasuriya, then Lasit Malinga, Sachin Tendulkar, all this franchise. इतना सारे big names that also affected me a lot, that भाई ये franchises को support करना ही है. But 2008, 2009, 2010, like we didn't have such great seasons. 2009 तो बहुत ही बुरा गया था हम लोग का. So that is how that attachment developed, and then I couldn't see any other franchise after Sachin retired also. Right. So your answer actually proved me to ask you two different questions. So I'll ask the first one. So since you're from Kolkata and in IPL, so initially when the IPL started, so the main point was players from that particular locality, they will play for that particular franchise and people will follow their particular local franchise. So Saurav Ganguly, iconic Bengal player, he was playing for Kolkata Knight Riders in the initial seasons. So when you are from Kolkata, so when people used to ask you that why don't you follow Kolkata and there is Saurav Ganguly in it, so what used to be your answer and what used to be your reaction? My answer would be like I used to say, like, see, Saurav Ganguly is definitely a very good player for India. He has been great. He has been a great captain. But whatever it is, I started my cricket. I follow my idol Sachin Tendulkar. Like his shots and all, I follow from A to Z what he plays. How does he play? So I used to notice everything. So since he moved into Mumbai Indians, I support him. At first, I'm not saying that I supported Mumbai Indians. I supported him. So when he went to Mumbai Indians, I also followed him there. आज अगर सचिन कोलकाता के लिए खेलता या आरसीबी के लिए खेलता, शायद मैं आज आरसीबी या कोलकाता फैन होता. So that's why that I used to say, अगर वही बोलता था कि अगर सचिन कोलकाता के लिए खेलता तो I would definitely support Kolkata Knight Riders and Sachin Tendulkar. But since he's playing for Mumbai and I have always followed him, I can't just move away from him like that. Right.
So in India, we usually see that the fans usually worship their idols. So previously, there used to be an era of Rahul Dravid, Sachin Tendulkar, Saurav Ganguly. Now it's an era of Rohit Sharma, Virat Kohli, Rishabh Pant, KL Rahul, and these iconic players. So do you think that fans, just like you, follow a franchise because of one particular player? Yeah, there might be some fans who follow for one particular player because, and those who are not from the local place. Like Mumbai ke liye, like most of them are from Mumbai locality only. So obviously they'll support the local franchisee. But some fans like me who have seen a player growing, who have admired a player, might support any other franchisee. Suppose like there are fans who like consider Virat as their idol. So they are supporting RCB, whatever they are performing in the IPL. But still, since their favorite player is there in the RCB franchisee, they are supporting RCB. So ऐसे ही होता है, like रोहित शर्मा को जो पसंद है, like now my current favorite is Rohit Sharma, but that is not the reason since I've always supported Mumbai. But अगर अब कोई फ्रेंचाइजी में मूव कर, I won't support him there because I've always been a Mumbai fan. But since जो लोग पहले से कोई एक प्लेयर को फॉलो कर रहा है फ्रेंचाइजी, those fans are like me. और अगर कोई those who are new to IPL, like कोई फैंस है तो विराट का गेम देखकर इम्प्रेस हो गया और क्रिकेट में आ गया, इसलिए वो दे आर सपोर्टिंग आरसीबी बिकॉज विराट इज प्लेइंग देयर. So this is how you can find many fans like. Right. But do you think that fans are also performance driven? So initially, you were, as you said, you were a Sachin Tendulkar fan, and when IPL started in the initial seasons, Mumbai Indians didn't perform well. But later on, when the transition from Sachin Tendulkar's Mumbai Indians to Rohit Sharma's Mumbai Indians happened, since then Mumbai Indians performed really well. They have built a solid core and they have won 5 titles. So, do you think that performance is one of the reasons, and this title win is one of the reasons why Mumbai Indians has the highest fan following in this particular league? Definitely, those who have like are new to cricket from like 2013, 14, they have seen Mumbai Indians winning all 5 titles, or at least 3 to 4 titles. They have seen them winning. So ऐसे ही like वो team जीतता है तो उसको ही support करते हैं. There are some fans like that, but that is not the correct thing, I suppose. क्योंकि आज अगर मुंबई हारती भी है next 5 years में, if we don't win a trophy, I'll still support them. क्योंकि ऐसा नहीं होता, फ्रेंचाइजी में सक्सेस आएगा, फेलियर्स भी आएगा. So you can't only support a franchisee, I feel, just for its success. You have to know its history. अगर कोई मुंबई फैन आके मुझे बोले भैया मैं मुंबई को सपोर्ट करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क हिम व्हाई डू यू सपोर्ट मुंबई. तो अगर वो बोले ट्रॉफीज के लिए, तो लाइक आई विल से दैट यू आर नॉट अ ट्रू फैन देयर. मैं उसको हिस्ट्री के बारे में पूछूंगा, कब जीता, कौन कौन प्लेयर खेला है. अगर ही इज फेलिंग टू से दैट, भाई वो ट्रू फैन नहीं मेरे हिसाब से. Right, right. So, but we see that when we see the fan following, Mumbai Indians in the league has highest fan following, then Chennai Super Kings has second highest fan following, and then RCB has third highest fan following. But when we see the number of titles, so Mumbai Indians has one highest number of titles, Chennai has also one. So their fan following is mainly title driven. Whereas if you see RCB, they have not won a single title, but still they are at number three in terms of fan following because their fan following is mainly Virat Kohli driven or AB de Villiers driven. So when we see a franchise like Mumbai Indians, so in Mumbai Indians, fans usually don't associate themselves with one particular player. They associate themselves with the whole team. So do you think that it's beneficial for the fan base? Like in what? So in terms of RCB, they are just Virat Kohli fans. But when we talk about Mumbai Indians, there is Kieron Pollard, there is Rohit Sharma, there is Quinton de Kock, there is Hardik Pandya, there is Jasprit Bumrah. About that, it's like they are big names definitely, but they also have failures too, because the thing which is the most successful, has been most successful Mumbai's backing of the players. Like Kiran Pollard or Hardik Pandya, who were they? No one knew them also. Like how did Hardik Pandya, Jasprit Bumrah get into Indian team? It's because of Mumbai Indians who backed
them very much. Like Bumrah, Hardik, Pollard, like if you see in the first initial stages of IPL, they were not good at all. Like they failed in most of the game. But udhar se back karke, these players have grown up so well. That's why now the fans, we can feel the team as a family, because like ऐसे backing करना, chop and change नहीं करना, we are seeing the same faces every year, mostly 7 to 8 faces every year. तो अब वो एक attachment भी build हो गया, भाई ये same team ही खेलेगा, we are a family. So that's why we can associate the fans can associate the team as a family and not any single player. Because in if you see in our success, like in our the titles we have won, कोई ऑरेंज कैप व कोई पर्पल कैप नहीं जीता. आई डोंट थिंक सो. इफ आई एम रॉन्ग यू कैन कॉन्ट्रडिक्ट, बट कोई नहीं जीता. लाइक कोई सिंगल परफॉर्मेंस, सिंगल प्लेयर डोमिनेटिंग कभी नहीं था इन द टाइटल विनिंग हाँ यस. तो इसलिए मैं लाइक एनी वन प्लेयर, लाइक कोई ऐसा नहीं किया. रोहित शर्मा जैसा लास्ट सीजन आप देखे 2020 में जब हम लोग ट्रॉफी जीते, ही वॉज नॉट गुड एट ऑल इन द एंटायर सीजन, बट क्या फाइनल में खेल दिया. So it's like that's why the backing which Mumbai Indians gives to its players is definitely beneficial for us. And seeing the same faces every year, same faces every game, like कुछ तो आता है like भाई ये तो हाँ, this is the team we want. इसलिए. Right. So, what is the role of support staff in making a franchise so successful and making that kind of family like connect with the fans? So, Mumbai Indians in their support staff and their talent scouting, we see that there are so many known faces. They invest a lot in their support staff. So, what is their role in making Mumbai Indians such a successful franchise? Support staff, I guess they have the most important role. The management and the support staff. The scouting which you're talking about is a very big thing for Mumbai Indians. I guess that is till now Mumbai Indians has done the best scouting. I feel Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, like what else? Ishan Kishan, Surya Kumar Yadav, like what else? Surya Kumar Yadav in KKR was not a successful batter. Like in the auction also we saw that no one picked up Surya. That also Mumbai Indians picked them. So uh, the tracking of talent, Mahela Jayawardene has done a very good job for us. And the support staff, which brings the players into a bonding, is very important. Like there has been a web series of Mumbai Indians. I've watched that also. In there, we can see the players are actually brought together. They play games. They do anything just to create the bonding between them, and so that there is no rift between the players, and there is a mutual understanding. Like and also the Paul, I don't know about. I'm just confused, unsure about the name of the gym trainer for us. I guess it's Paul. I don't. I think so. Anyway, so वो gym में भी जो like how he trains them, like कोई speciality नहीं है किसी को भी. रोहित शर्मा इंडिया के लिए खेलता है, हार्दिक पांड्या इंडिया के लिए, भाई ईशान किशन के लिए जो भी होगा रोहित शर्मा के लिए वो भी होगा. So that there is no disparity between players. भाई तुम बड़ा player हो, तुम junior player हो. So everyone is treated on the same ground. Everyone is trained on the same ground. So that actually helps us a lot, because that creates the belief in the juniors, the newcomers who are coming in. Because वो लोग देखते हैं भाई senior लोग को भी तो इतना ही बोल रहे हैं, हम लोग को उतना ही बोल रहे हैं. तो we should put more efforts so that we can show that हम लोग better है senior के लिए. So that drive within the young players can create such good players for Mumbai Indians. अगर ये ड्राइव नहीं रहता तो we couldn't have seen the likes of Hardik, Ishan or Surya Kumar or Bumrah. Right, right. So you mentioned some names. So when they came into Mumbai Indians, they were uncapped Indian players, and right now they all have become capped Indian players. So how important is it for a franchise to be a part of a player's journey from making them uncapped players to capped players? Because right now when we see Mumbai Indians lineup, in their lineup almost all their Indian players are capped Indian players. Yeah, like if you see the lineup, at least seven players we have who are all capped. Rahul Chahar, Krunal Pandya, Hardik Pandya, Ishan Kishan, Surya Kumar Yadav, Rohit Sharma, Jasprit Bumrah. So the strong core of the Indian team is in our lineup. तो वही कह रहे कि like हार्दिक पांड्या, वो कहाँ से, I'll talk about हार्दिक पांड्या first. तो कहाँ से, like he had hit 4 sixes or 5 sixes in over for Baroda. So from there Mumbai Indians picked him up और उसको ले लिया अपने टीम में.
हार्दिक पांड्या क्या किया फर्स्ट कुछ सीजन में जब लिया था, ही वॉज नॉट दैट ग्रेट, तो सब डाउटेड हिम दैट क्यों लिया इसको, लाइक ही इज नॉट दैट अ ग्रेट प्लेयर, बट क्या उसका आप इवॉल्वमेंट देखो, लाइक फ्रॉम लाइक ही वॉज वेरी थिन एंड ऑल, ही कुडंट हिट क्लियर द ग्राउंड, सो उधर से क्या इवॉल्व हुआ वो एज अ प्लेयर, लाइक आप देखो, लाइक he is considered among the best finishers now, like agar in the world, like bats at number 5 and bats at number 6 or anywhere, but he can actually clear the ball now. So uska range hitting practice, Mumbai Indians, like he has told in an interview also, like the belief that they have shown in him, like you can do it, तो वो उसको ऐसा इवॉल्व किया एज अ प्लेयर. फिर ईशान किशन में आता हूँ. ईशान किशन in 2018, like he was brought in by Mumbai Indians and he was not at all great. वो 2018 में उसको ओपनर हिसाब से खेला, लाइक ही वाज नॉट दैट ब्रिलियंट, बट स्टिल ही वाज बैक्ड इन ऑल अदर गेम्स इंस्टेड ऑफ आदित्य तारे हु हैज बीन अ सीनियर प्लेयर एंड हैज परफॉर्म फॉर मुंबई. तो एक सीनियर के ऊपर आप एक जूनियर को खिला रहे हो, तो दैट बिलीव व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड इन हिम इज इमेंस. तो उधर से ईशान किशन कैसे इवॉल्व, 2019 में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ही स्कोर्ड अबव 350 रन, 2020 में ही स्कोर्ड 500 रन, then he got into the Indian team. फिर वही बोला कि the belief that the management has shown in him that he can be a very good player, वही उसको ऐसा player अब create किया है. Now coming to Krunal Pandya, like we saw वो भी back the 2018 auctions में, like what the support staff बोला था, whatever happens we are going to buy Krunal Pandya again, we have to back him. उसको बाय किया 2018 में, 17 में उतना परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था उसका, बट 18 में खरीदा, 18 में भी उसका अच्छा नहीं रहा, बट 19 से इवॉल्व कर दिया कृणाल पांड्या एज एन ऑलराउंडर, विनिंग आस मैचेस विद पोलार्ड, टेकिंग क्रूशियल विकेट्स, bowling यॉर्कर्स, सम ऑड यॉर्कर्स. तो वही जो इवॉल्व किया एज अ बॉलर, लाइक इन द पावर प्ले आल्सो और इन द डेथ ओवर्स, then he got into the Indian cricket team. He also said that the backing up and the belief which Mumbai Indians showed has made him what he is today. तो ऐसे ही प्लेयर्स क्रिएट होता है ना. जसप्रीत बुमराह, जब उसको ऑक्शन में कोई नहीं ले रहा था, दे गॉट इट, मुंबई गॉट इट. उधर से उसको एज अ डेथ बॉलर ट्रांसफॉर्म करना, देन अंडर द लीडरशिप ऑफ मालिंगा, देन ही इज आइडल. तो ऐसा एवरी गेम बैक करना, मालिंगा इतना एक्सपीरियंस बॉलर था, लाइक मुंबई इंडियंस व्हेन बुमराह जॉइंड आई गेस हैड वेरी एक्सपीरियंस बॉलर्स, बट उसको फिर भी एक्सपीरियंस बॉलर रहने का भी इंस्टेड दे वर देयर, बट स्टिल बुमराह वाज बैक इनटू द टीम एंड वो उसको सब इंपॉर्टेंट मैच खिला रहा था. इसलिए बुमराह उधर से वो एक्सपीरियंस लेकर, फेसिंग हार्डशिप्स एंड ऑल, वो उसका पहले तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, ही यूज्ड टू गो अबव 8 और 9 इकोनॉमी, बट उधर से कंट्रोल करके ऐसे इवॉल्व करना, now is one of the finest death bowlers. Again the belief comes into the question and backing. इसलिए मुंबई इंडियंस जो बिलीव दिखाता है एंड बैक करता है प्लेयर्स, तो आई गेस दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर अ प्लेयर टू हैव, बिकॉज वो आई गेस कोई और फ्रेंचाइजी में नहीं दिखता. एम एस धोनी भी देखा है, ही प्रेफर्स सीनियर प्लेयर्स. विराट कोहली को भी देखा है, ही प्रेफर्स एक्सपीरियंस फेसेस इन द लाइनअप. तो ऐसे ही सब फ्रेंचाइजी में एक्सपीरियंस प्लेयर्स को प्रेफर करते हैं मैनेजमेंट, पर मुंबई क्या, दे ओनली प्रमोट यंग प्लेयर्स व्हिच डीसी इज डूइंग नाउ. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो गेटिंग द सक्सेस दे वांट. Right, right. So you compared Mumbai Indians with Delhi Capitals, and one common thing about both the franchisees that they both go with a similar set of template where they have two overseas bowlers. They play one good, genuine all-rounder, and then they play one top order overseas batsman. So do you think that this is the template that other franchisees should also follow? I'll when I come to that, I will say that depends. अगर कोई इंडियन अच्छा ऑलराउंडर रह गया इन द टीम में, लाइक पंजाब हैज अ गुड इंडियन कोर इन एज ऑलराउंडर, शाहरुख खान, दीपक हुडा, तो इफ दे आर बैक्ड आई गेस दे माइट बी मोर सक्सेसफुल. तो वो फ्रेंचाइजी के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक वेयर दे लैक. अगर कोई फ्रेंचाइजी में देखता है कि ओपनिंग में लैक करता है, तो ठीक है, दो फॉरेनर ओपनर खिला दो. या कोई अगर फ्रेंचाइजी देखता है कि मिडिल ऑर्डर में दे आर लैकिंग अ गुड बैटर, तो वो कोई ओवरसीज खिला दो. अगर लैकिंग अ गुड ऑलराउंडर, तो ओवरसीज खिला दो. इट्स नॉट मैंडेटरी थे कि दो ओवरसीज बॉलर खिलाना पड़ेगा. अगर कुछ इंडियन अच्छा बॉलर आ गया, तो यू कैन ऑल्सो गो विद दैट. मुंबई को चेन्नई में देखेंगे आप कि लाइक जयंत यादव को खिलाया, लाइक दे ओनली प्लेड विद वन ओवरसीज बॉलर. तो वैसे ही आई गेस वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन पे ऊपर
कहाँ क्या। तो दिल्ली में अगर आप देखें तो उधर दैट्स अ टोटली अ बैटिंग पिच। तो अगर आप दो बैटर के लिए गए तो एक बॉलर कम खिलाया ओवरसीज, तो यू कैन बेनिफिट ऑल्सो। तो वैसे पिच पे और आई गेस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा वो। Right. And another thing that's common between Delhi Capitals and Mumbai Indians is that Ricky Ponting was previously in the support staff of Mumbai Indians, and he believed that there should be a young Indian player who should lead the franchise, and then the captaincy was given to Rohit Sharma. Similarly, in Delhi Capitals, under Ricky Ponting's leadership, first the captaincy was going to Shreyas Iyer, and now the captaincy has been given to Rishabh Pant. So, do you believe that when the support staff shows faith in young, talented players and they give them that kind of responsibility, then youngsters feel very safe and secure in the franchise and they perform really well? एग्जैक्टली आई लाइक टू कंपेयर दिस विद डॉक्टर्स। अगर कोई डॉक्टर किसी बड़े डॉक्टर की इंटर्नशिप करने गया, तो लाइक व्हाट दे डू नॉर्मली, तो वो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर ने बोला ठीक है चलो तुम ये ऑपरेशन हैंडल करो। नाउ द जूनियर इज लाइक इन अ टेरिबल सिचुएशन, भाई मैं कैसे करूं, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम जस्ट न्यू हियर। तो वो बोला कि यू कैन डू इट, जो बात बोल रहा है यू कैन डू इट, एंड ही इज बीइंग सक्सेसफुल आल्सो इन द ऑपरेशन। वही टीम में हो रहा है, जब आप यंग टैलेंट में एक सीनियर प्लेयर के ऊपर आपको विश्वास दिखा रहा है कि यू कैन डू इट, यू विल परफॉर्म बेटर। वो जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंस बिल्ड कर रहा है, वो माइंड में चल रहा है, कॉन्शियस में, लाइक आई हैव टू डू इट और एल्स आई एम आउट। दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंस इज मेकिंग देम परफॉर्म एंड रीचिंग माइलस्टोन्स, आई गेस। Right. And another thing that's common between Delhi and Mumbai is that there are lot of capped Indian players in the playing 11 of both the franchisees, and they play for India in all three formats. So, how important are capped Indian players? And do you think that capped Indian players they they make a franchise successful, they gel well with the youngsters, and then capped Indian players they drive fans also, they attract fans also towards the franchise? Obviously cap players share their experience with the junior one. That experience counts a lot. Like Rohit Sharma bhi bola hai, like it's not just captaining in the field about the players, it's also the bonding and sharing the experience with the young players, क्योंकि वो लोग वो उनको भी एक दिन इंडिया के लिए खेलना है, देन हैव टू परफॉर्म वेल। तो अगर सीनियर प्लेयर्स उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो वो एक्सपीरियंस लेकर एटलीस्ट दे कैन अंडरस्टैंड जो व्हाट आई एम गोइंग टू फेस, तो दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो वो जो प्रिपरेशन पहले से वो लोग लेता है, आई थिंक दैट वर्क्स वेरी वेल। अगर आप आवेश खान को इस साल देखिए, तो वी हैव सीन हिम परफॉर्मिंग रियली वेल। तो एक्सपीरियंस लाइक ईशांत शर्मा, उमेश यादव, इतना सारा एक्सपीरियंस है, रबाडा को भी बोले, लाइक ही हैज बीन विद ब्रिलियंट बॉलर्स लाइक ऑफ द इंडिया, साउथ अफ्रीका। तो वो जो एक्सपीरियंस आ रहा है जो कैसे बॉलिंग करना है, कब कैसे करना है, तो लाइक वही आई गेस इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अ यंग प्लेयर। तो आप देखिएगा लाइक केकेआर मैच में, लाइक आई थिंक केकेआर में ये लैक कर है, बिकॉज आप केकेआर मैच में देखेंगे शिवम मावी जो 6 चौके खाया, लाइक ही बोल्ड द सेम लेंथ एंड ऑल। कोई आकर उसको नहीं बोला कि भाई अग्रेसिव भी शॉर्ट बॉल डालो और कुछ यॉर्कर डालो, कोई बोला नहीं। बट आवेश खान को देखेंगे, लाइक व्हेन ही वाज बीइंग हिट, एटलीस्ट ईशांत शर्मा और कोई रबाड उसके उसके आके बात कर रहे थे, भाई ये बॉल डालो, ये यही होगा, ये तुम नहीं डाल रहे हो। तो ऐसे ही लाइक ही इम्प्रूव्ड अ लॉट। अब मुंबई के मैं बात करूंगा, लाइक जसप्रीत बुमराह एंड ट्रेंट, like what how do they partner each other well? When Trent Bolt is bowling, he's getting hit for boundaries, जसप्रीत बुमराह आता है तो वो बोलता है कि ट्रेंट यू आर नॉट बॉलिंग योर बॉल, दिस इज नॉट योर स्ट्रेंथ। तो वो बोलता है कि ये बॉल डालो, जो एक्सपीरियंस उधर शेयर हो रहा है वो यंग टैलेंट्स के में भी। तो वही एक्चुअली इज वेरी वेरी गुड थिंग फॉर द यंग टैलेंट्स। क्योंकि अगर आप सीनियर प्लेयर आके बोले भाई ये बॉल मत डालो, ये बॉल में मारेगा, यॉर्कर डालो या शॉर्ट बॉल डालो, कुछ भी डालो, आई एम टॉकिंग अबाउट पेसर्स, तो दैट इज वेरी गुड थिंग फॉर द यंग पेसर्स। आप धोनी को देखेंगे, जब ये कोई यंग स्पिनर या पेसर जो भी बॉल डालता है, वो कमांड करते हैं कि भाई इधर डालो उधर डालो, दैट्स व्हाई द कॉन्फिडेंस ग्रोज इन देम। आप कुलदीप यादव को देखेंगे, कुलदीप यादव वाज सो सक्सेसफुल अंडर धोनी, क्यों? धोनी यूज्ड टू कमांड हिम भाई किधर बॉल डालना है। बट अब जब धोनी चला गया, लाइक नाउ ही इज नॉट फाइंडिंग द थिंग, लाइक एनी पर्सन हु कैन एटलीस्ट गाइड हिम ड्यूरिंग द मैच, इसलिए कुलदीप यादव हैज आल्सो बीन परफॉर्मिंग वेरी बैड। तो इसलिए द young talents need some
share of experience by the experienced ones. Right, right. And Mumbai Indians, they have a unique hashtag that they use on social media handles. And that hashtag is they call themselves a hashtag one family. So, as a fan, what does this hashtag mean to you? And how do you interpret this? Like I guess Mumbai Indians is the first franchisee to call their fans as family. So that really feels a proud thing. Kyuki like they say like the fans are just don't call yourself fans, call yourself a family. Like the way they connect to their fans, the way they like so it is absolutely brilliant. Like Mumbai Indians, there's an official app also. Other fans can connect with the players. Like not actually, but you can at least be in touch with the dressing room and all. So that thing which they create the atmosphere, like in the stadiums also we have seen, like when there are Mumbai matches, sub blue army pura khare ho jate hai. So like even when they are playing, so Rohit Sharma had also mentioned, like when I'm playing, मैं game के बारे में नहीं, I'm mostly thinking about the people who are watching out for me because they are my family and I have to perform well for my family. तो वो एक connection, वो एक bonding, it really feels good. बिकॉज जब प्लेयर्स लोग बोल रहे हैं भाई तुम लोग फैंस नहीं हो योर फैमिली एंड वी आर परफॉर्मिंग फॉर यू किरण पोलार्ड भी मेंशन किया है लाइक जब वो सिक्सेस मारते हैं लाइक इट्स नॉट ओनली फॉर हिज सेटिस्फैक्शन और कुछ या गेम जीतने का तो ऑब्वियसली है बट इट्स ऑल्सो फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग हिम आउट लाइक दे एक्सपेक्ट समथिंग किरण पोलार्ड जब उन लोग को बुरा लगता है कि लाइक दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल तो प्लेयर्स ऑल्सो फील बैड लाइक हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाए like fans were very disappointed. So that is the bond which they create, and the connection is really great. And I feel proud to be a part of the family. Right. And then there is another unique feature about Mumbai Indians that they focus a lot on pre and post match analysis. They bring a lot of content around pre and post match analysis on their MITV. And then similarly, they connect with their fans during the game. And then they bring a lot of content on their social media channels about the dressing room talks that happen after the match, what the coaches are saying to the players after the match. So how important is this analysis for a fan, and how useful is this to connect with the fans and make them feel that they are also part of the dressing room? See, it's actually an excitement for me to see them speak. क्योंकि you don't know what is going the field. Like when there's a situation जब कोई player अच्छा नहीं खेले, so like you are fumed up that भाई क्या खेल रहा है ये shot क्यों खेला, like then you are not believing that भाई ऐसे shot क्यों खेला ये game कैसा हार गया. So when after the game when they're talking to in the dressing room, when they're talking about the same point, then you can feel जब भाई ये तो मैंने भी सोचा था. Now they're talking about it, at least they're addressing it, and I feel like हाँ भाई मेरा तो प्रॉब्लम एड्रेस हो गया इधर ये नहीं करना चाहिए था तो व्हेन दे शो अप इन द ड्रेसिंग रूम स्पीक अबाउट दैट एंड एटलीस्ट ये सेटिस्फैक्शन आता है कि हाँ वो लोग रियलाइज किए थे हाँ दे शुडंट हैव डन दिस दे शुडंट हैव डन दैट तो लाइक वो एनालिसिस जो बोलता है लाइक दैट आल्सो कैन आल्सो हेल्प फैंस भाई क्या गलत हो रहा है मुंबई के लिए अगर कोई पूछे व्हाट इज द थिंग गोइंग रॉन्ग देन यू कैन एक्चुअली वॉच द एनालिसिस एंड यू कैन आल्सो एक्सप्रेस इट बाय दिस वाज नॉट डन राइट दिस वाज नॉट डन तो ये कुछ होता है तो like you can connect with them and also I feel those videos are really important being a fan because when you see the coach itself speaking so informally with the players मजाक हो रहा है ये हो रहा है तो बॉन्डिंग देखकर भी खुशियां आता है आती है कि लाइक एक्साइटमेंट आती है आपको भी आती होगी कोई प्लेयर्स को बॉन्डिंग देख के ये सब ड्रेसिंग रूम में क्योंकि वी आर ओनली सीइंग हिम देम प्लेइंग एंड ऑन द फील्ड वी एक्चुअली डोंट हियर देम व्हाट दे आर स्पीकिंग ऑन द फील्ड बट मैच के बाद जो हैंडशेक्स के समय वो जो वीडियोस होता है कि क्या बात कर रहे हैं लाइक दे आर फन एंड ऑल्सो इट क्रिएट्स अ बॉन्डिंग एंड ऑल्सो एक्साइटमेंट भी क्रिएट करता है कि भाई चलो देखे क्या हुआ मैच के बाद रोहित शर्मा और विराट तो हंस रहे थे क्या बात की तो देन दैट वीडियो इज समटाइम्स पोस्टेड तो वो देखकर एक हंसी आती है लाइक क्या Right. And how important is it when the franchise gives players the respect that they deserve? Because we have seen that when Kyron Pollard, he has played his, I guess it was his 200th match for Mumbai Indians, and similarly for Rohit Sharma, then they made special jerseys for them for that particular match.
and they gave a similar kind of respect to other legends that have played for Mumbai Indians, be it Malinga when he played his milestone game, and then Rohit Sharma when he was captaining his milestone game. So how important is it that when the franchise gives this kind of respect to players, players also feel that yes, we should perform for the franchise? Exactly, the respect which they show, because obviously will drive them to perform better. अगर आप पोलार्ड को देखिए, like when he played his 200 match, then that actually motivated him to, by this is not the end, I have to do more, I should go for another milestone. So because I've been given this respect by my franchisee, they have recognized what I've done, so that actually feels good as a player. Malinga, who has always performed for us, and that he deserved that. लाइक कोई प्लेयर को लाइक who have actually done for the team, अगर उसको रेस्पेक्ट दिखाएंगे आप, तो उन लोग के अपने आप ही एक आ जाएगा मोटिवेशन, भाई ये दिस इज नॉट द एंड, मेरे को एक और माइलस्टोन रीच करना है, आई हैव टू डू मोर फॉर द टीम. ठीक है, अगर आपको रेस्पेक्ट नहीं दिखाएंगे, इफ आई एम टेलिंग, अगर कोई फ्रेंचाइजी रेस्पेक्ट नहीं दिखा, तो वो सोचेगा कि भाई क्या इतना कुछ किया फ्रेंचाइजी के लिए, एटलीस्ट कुछ एक तो रेस्पेक्ट भी नहीं मिला, 200 गेम खेल रहे, दैट इज ऑल्सो नॉट शोन बाय द फ्रेंचाइजी, दे डोंट रिकॉग्नाइज. तो वो क्या डिमोरलाइजिंग होगा, एंड दैट विल लीड टू द फैग एंड ऑफ हिम इन दैट फ्रेंचाइजी. लाइक नेक्स्ट ईयर, लाइक अगर उसको पूछेगा भाई तुम इसके लिए खेलना चाहते हो, तो he will नहीं भाई नहीं खेलना चाहते. बट अगर वो रेस्पेक्ट अगर दिखाएगा, तो उसको एक और मोटिवेशन आएगा, भाई नहीं, दिस फ्रेंचाइजी डिजर्व्स मोर, दे हैव गिवन मी व्हाट आई डिजर्व, नाउ दे डिजर्व मोर, तो मेरे को और भी अच्छा परफॉर्म करना है, एंड आई विल डू इट टिल आई रिटायर. तो ये जो बिलीफ आती है, ये जो मोटिवेशन आती है, आई गेस दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर प्लेयर्स. लाइक पोलार्ड को आप देखिए, ही हैज बीन परफॉर्मिंग फॉर 12 to 13 सीजन. अगर उसको वो बैकिंग, वो रेस्पेक्ट अगर नहीं दिखाते उसको, लाइक आई डोंट थिंक सो वो ऐसा करते अभी भी. So that's why he's still performing for us. So that belief is very important for, I guess, for a player. Like Hardik Pandya couldn't perform this season well. तो उसको भी रेस्पेक्ट दिखाया, खिलाया, बैक किया. लास्ट गेम में जो 16 of 7 मारा, that became out to be very crucial for us. So then he also stood up. तो इसलिए I guess that respect with the franchisee and the belief which is showing on the players is really helpful for the players and for the franchise itself. अगर ज्यादा चॉप एंड चेंज या ज्यादा कुछ करेंगे, तो आई गेस इट वुड फ्रेंचाइजी वुड नेवर बी सक्सेसफुल. Right, right. So you mentioned a very good point. So probably the last question of this particular segment, that when auction happens, so Mumbai Indians auction strategy is always talked about, and they usually target very good players. And when they buy those players, Mumbai Indians fans, they are always very happy with the kind of buys that they have on the auction table, and they believe that 50% of the times they have already won the title at the auction table. They usually don't release a lot of players, and when they release, then they have a sure shot plan in their mind that they have to target this particular player, and then they go for those particular players. So how important is their auction strategy in making Mumbai Indians a successful franchise? Obviously, auction strategy is the most important file. I feel you will see in Mumbai Indians. One thing I've noticed, like they don't spend much for big names and all. They just only want to solve the areas in which they lack, the backups they want, or else they don't like to spend much. अगर आप इस season देखेंगे, like Coulter 9 strategy, like he was bought for 8 crores, but he was sold just to bring him at a lower price. So he was got at 5 crores. So आप देख तो, बट द इंडियन कोर वाज सेम, लाइक कोई भी प्लेयर्स उतना रिलीज नहीं किया. दैट इज बिकॉज दे बैक देयर प्लेयर्स. वो सोचते हैं कि भाई ये टीम ही मेरे लिए परफॉर्म करेगा, आई डोंट नीड एनीवन, जस्ट द बेंच स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथन अप द बेंच. दे बाय प्लेयर्स लाइक क्रिस लिन वाज बॉट जस्ट फॉर क्विंटन डिकॉक्स रिप्लेसमेंट, क्योंकि अगर वो नहीं खेलेगा तो लिन खेलेगा. एंड लाइक वी हैव एवरी रिप्लेसमेंट फॉर एवरी ईच एंड एवरी प्लेयर. तो अगर कोई एक नहीं खेला, तो वी नो दैट देयर इज समवन ऑन द बेंच हु कैन परफॉर्म फॉर अस. सो लाइक वही बिलीव जो, लाइक वी जस्ट थिंक ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बेंच, और कुछ नहीं. लाइक टीम एक ही रहेगा, वही सेम प्लेइंग 11 ही खेलेगा. आप देखेंगे मुंबई इंडियंस हैव ऑलवेज स्टक टू द सेम प्लेइंग 11 थ्रू आउट द सीजन. एक दो चेंज आता है, बट अगर कोई प्लेयर अनफॉर्चुनेटली मिस आउट किया, तो उसका बेंच स्ट्रेंथ है, लाइक वी कैन रिप्लेस एनीवन फ्रॉम दैट. लाइक दैट्स व्हाई वी डोंट गो फॉर बिग नेम्स. अगर एक प्रॉब्लम है, अगर वी गो फॉर बिग नेम्स, देन क्या होता है, अगर उस प्लेयर को नहीं खिलाया, तो वो प्लेयर को डिमोटिवेटेड हो जाता है, वो फ्रेंचाइजी छोड़ना चाहता है. एंड इफ वी गो फॉर
स्लाइटली उतना फेमस नेम्स नहीं, तो वो लोग क्या होता है भाई, अगर हाँ चांस मिला है तो व्हेन वील गेट अ चांस वील गेट टू परफॉर्म, वो ही एक होता है। लाइक दैट्स व्हाई आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ भाई गोइंग गो फॉर बिग नेम्स, ये प्लेयर को खरीदो, ये प्लेयर को खरीदो। लाइक वी हैव सीन पंजाब दिस ईयर, राइली मेरिडिथ, जाय रिचर्डसन को 22 करोड़ खर्च कर दिया। नाउ दे वर अंडर द प्रेशर, भाई उसको तो खिलाना ही है, इतना पैसा खर्च किया। लाइक मुंबई इंडियंस में देखेंगे इतना पैसा, दे डोंट नेवर स्पेंड सो मच, दे ओनली स्पेंड अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, समटाइम्स दे गो हाई, बट वो प्रेशर नहीं रहता है भाई ये प्लेयर को इतने पैसे से खरीदा है, वी हैव टू प्ले हिम। तो इसलिए एंड मुंबई इंडियंस बिलीव इन मेंटेनिंग द इंडियन कोर, दे डोंट गो फॉर ओवरसीज मैच। तो अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो लाइक इट विल बी अ वेरी big setback to us because we lose many of our players. But I guess Mumbai Indians as a franchise, what I've understood them, they'll only try to retain, like buy back the players which they had this season. So अगर 6-7 भी retain कर जाए, they'll be happy. But they'll go more than 50%, try to get more than 50% of the players they are having, because Mumbai Indians have always done that. जो team last season खेला था उस team को भी next season maintain करने की। Right. I think that's a brilliant answer, and that's what makes Mumbai Indians one of the successful fans, and that's what makes Mumbai Indians a franchise with the highest fan base. So, before we leave, so according to you, if you have to name one factor that is the reason why Mumbai Indians have highest fan following, then what would be that particular factor? If I come to that, it would be the team. It would be the bonding with the fans, the the connection with the fans, like how they relate to the fans, how they actually treat the fans well. Everything counts into it, and like the trophies will also be a definitely factor for some new fans who have been here. Obviously, the success is definitely a factor, but moreover that the connection and the bonding they create with the fans, like they call it MI family, Mumbai Indians family, or MI Paltan, like all those who support, they call them a Paltan, be a part of the Paltan. So that actually motivates as a fan, भाई ये टीम इतना दिखा रहा है, इतना क्लोज टच बॉन्डिंग दिखा रहा है, कनेक्शन दिखा रहा है हम लोग के साथ, so let's also put an effort, support them when they are having bad times, support them when they are having good times. तो इसलिए like that, that creates a very big impact on fans, वो connection or bonding. And also the fans can also, I guess the fans shouldn't stop supporting its own team, because like Neville, you know, a Manchester United footballer, has always said that you can change your wife, you can change your girlfriend, but you can't change the team you support. So that's why I, as a fan, feel that I'll always be there with Mumbai when they're losing, when they are winning. आज success में, आज 500 title में, if I've been a part, then I can also be a part when they're at the bottom of the table. Right. And I think that's a brilliant answer as a Mumbai Indians fan. And I can feel your connection with the franchise, that how emotional and how passionate you are. So thanks for coming, and thanks for sharing your views and sharing your passion towards the franchise. I hope the viewers will really like this episode, and all the Mumbai Indians fans will really appreciate that how the franchisee is connecting with them, and how they are providing the respect to players, and how they are putting efforts in generating such social media content, so that they can maintain the highest fan base in the league. So thank you very much. Thank you. Thanks for having me.